हाय, वेलकम टू जुरुसेज अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत क्विकली बात करने वाले हैं करियर इन टीचिंग के बारे में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन अ करियर इन लॉ and you want to become a law professor in India, then in this video we are going to discuss a step-by-step guide on how you can do that. So let's start this video. उसके पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में अगर आपको टीचिंग में जाना है, अगर आपको प्रोफेसरशिप में जाना है, तो there are 3 steps. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एंट्री होती है वो होती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड फाइनली यू मे बिकम अ प्रोफेसर. So there are different eligibility requirements for all 3 career progressions. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to get into the entry level of assistant professorship. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है obviously having an LLB degree. तो या तो आपके पास 3-year LLB डिग्री हो सकती है या फिर जो 5-year integrated LLBs होते हैं, either of them may be important as a first step in becoming a professor. उसके बाद आते हैं LLM पे. अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपको टीचिंग में करियर एस्टैब्लिश करना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव एन LLM डिग्री. अब LLM आप या तो इंडिया से कर सकते हैं या अब्रॉड से कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. बिफोर चूजिंग योर कॉलेज you should see if you're meeting the right requirements or not. तो अगर आप इंडिया से LLM कर रहे हैं तो it should be a UGC recognized Indian university. अगर आप अब्रॉड से LLM कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि whether that LLM is recognized in India or not. As of now, all LLM durations are valid क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले there was some news that LLM may now be of 2 years, but अभी as of now currently there are 1 year, 2 year and 3 year LLM courses available. So either of them may be relevant if you want to become a professor. तो आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए, LLM डिग्री होनी चाहिए. और थर्ड स्टेप है क्लियरिंग द UGC नेट लॉ एग्जाम. सो UGC नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जो आपको क्लियर करना होगा टू बी एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया. अब ये जो एग्जाम है ये आप अपने LLM के वक्त भी क्लियर कर सकते हैं. सो द आइडियल टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम इज वाइल यू आर परस्यूइंग योर LLM. So this again is a very important step. इसके बाद you are eligible for applying to assistant professor roles. तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज वैकेंसीज एडवर्टाइज करती हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC नेट क्वालिफिकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन there are many other requirements that good law universities have. So generally अगर आप एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में as an assistant professor काम करना चाहते हैं and even in good private universities they may have other additional criteria as well. So it's very important to understand what they are. So a few factors that do impact this decision is first of all your LLM college. So you have to make sure that you do LLM from a good university which goes on to show your academic credentials. You should have good research publications in your name. It may down the line be important if for your career progression that you are a PhD candidate as well. So some people also prefer that they right after LLM they go for PhD as well. So that is a personal call, but you also need to understand when you should do PhD and how to go about it. Lastly, you should have a good academic record throughout your LLB and LLM degrees because these factors are very important if you want to have a career in teaching. Now, if you have any doubts regarding any of this, we are having a free webinar in which we will be talking about growth hacking your teaching career. We will be talking about cracking the LLM, UGC NET and PhD entrance exams in one go. Because since a career in academic is a long drawn process, it's important to understand how you can clear all these exams in one go and make sure that your chances of becoming an assistant professor rise exponentially. So that webinar is on 31st March 2023. It's an online webinar. You can see other details on the screen. We will also be giving out a free career prospectus PDF containing all details of various LLM entrance exams, UGC NET exam and PhD entrance exams. So if you're interested, you can register for this webinar for free from the link given in the description box. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.